esophagus or food pipe, stomach, it is liver, gallbladder. At the back side of liver, gallbladder found, but I can't make the back side because it is not a 3D structure. So I have made the gallbladder near the liver. It is pancreas. I have told you it is a kind of gland that is found below the stomach. This one is large intestine. And that network like structure is small intestine. Rectum. क्या हुआ बेटा? Anus. So these are the organs and glands. Buccal cavity. Buccal cavity के अंदर salivary glands present होगी. Buccal cavity continue with the esophagus or food pipe. Esophagus or food pipe is continue with the stomach. And at the opposite side of stomach, largest gland found, liver. At the back side of liver, gallbladder found. Below the stomach, pancreas found. And that particular tube like structure that you can see here, जो स्टमक से अराइज हो रही है और आपके नीचे तक जा रही है, इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. दैट आई एम मेकिंग फ्रॉम द पर्पल कलर. ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है एंड इट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. So the upper part of small intestine that is connected with the stomach is known as duodenum. Duodenum. It is the upper part of small intestine that connect with the stomach, duodenum. So small intestine is divided into three parts: duodenum, ileum and ischium. But here we are going to discuss about the duodenum only. The upper part of small intestine that arises from the stomach is the duodenum. So these are the places in alimentary canal where the organs and glands are found. Now finally, you all are aware about the digestive system. What are the glands and organs found in the digestive system? Now I am going to start the nutrition process in human. So again, in nutrition process in human, all the same steps are followed. The first step is ingestion. Ingestion. I have already told you about the ingestion. Ingestion is the intake of food and keep inside the mouth. खाना हमने लिया, हम कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं खाने को कैप्चर करने के लिए? डेट इज द हैंड्स. अमीबा क्या यूज करता था? सूडोपोडिया. तो हमने खाना लिया, हाथ से लिया, उसे मुंह में रखा. तो जब मुंह में रखा, इंटेक ऑफ फूड जो हमने किया है, दैट प्रोसेस नोन एज द इंजेशन. आफ्टर दैट इन माउथ व्हाट हैपेंड? टीथ आर प्रेजेंट. So what teeth is going to do? Teeth is going to chew that food. खाना अंदर लिया और टीथ ने जो उसको chew करना स्टार्ट किया, then that all process involved in the ingestion. Now the second step of nutrition is digestion. That you will have to study in detail. केवल एक यही स्टेप है जो काफी लंबी है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में और आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको. Simple definition of digestion is that you have already studied in lower classes as well. तो digestion की simple definition क्या होता है? The breakdown of complex food into the simpler form. Breakdown of complex form of food into the simpler food with the help of digestive enzymes. With the help of digestive enzymes. तो जो हमने खाना खाया है उसके अंदर हमें पता है हमारे खाने में जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सारे किस फॉर्म में रहते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं. उनको क्या करना होता है? सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो this process is known as the digestion, and in this process only alimentary canal or digestive system is going to participate. अब यहाँ हमें देखना है कि हमारे जो खाना होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, so what are the biomolecules present in that complex food? That is also not new.
बहुत छोटे से पढ़ते आते हैं। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है हमारा, it consists of fats are also known as lipids, vitamins, minerals and ragi as well. So these are the biomolecules that are found in our food. बहुत ध्यान से